Good morning, everyone. My name is Suryan Singh, and I hope you all are doing good. So, the date is January 8, 2024. So, Happy New Year, guys. And it's been a long time since I have uploaded any video. So, today is the day when I decided to log in back into my YouTube account. So, yeah, before this, you must have seen a video of the Apple Watch Ultra that I uploaded recently. So if you liked it, please like the video and comment whatever you want to. And today the topic of the video is that my Bullet has clocked almost 12,000 kilometers, and it's been almost 4,500 kilometers since the oil change and the service. So today we are going to get our motorcycle serviced, and this time I'm not using the castor oil. I have shifted to Motul, and yeah, I have removed the DB killer as well. Dogs, man. Yeah, man. It's so chilly out here. The temperature is around 11-12 in Delhi right now. It's pretty cold. And from now on, the New Year resolution is that I'll upload at least 69 videos this year. And most of it would be new content, and some of it would include videos from the past year. Like I have been on the Northeast ride in October, but I haven't uploaded any video. So it won't be in parts because it was a project that was being held by Royal Enfield. So they have all their content right. So I'll post a showreel kind of video of the whole exploration that I did in Arunachal and Assam. And that's what would be. Oh my god, वो भाई बम्प ही नहीं ठीक कर रहे हैं यार. तो इस बार कोई मैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर कहीं नहीं जा रहा. This time I have found a old mechanic near my house. He basically only fixes Royal Enfields. Every time I have visited him, I have found him working on an old Royal Enfield cast iron, restoring it. So I kind of trust him that the kind of work he does is good. मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे. आप लोग मैसेज कर रहे थे कि why are you not uploading videos on YouTube? I was saying soon. बट आज वो सून आ गया है. सो आज के बाद से कॉन्टीन्यूस व्लॉग्स वगैरह तो मिलेंगे ही. कंटेंट मिलेगा, ट्रैवल व्लॉग्स, फिल्म मेकिंग टिप्स. एंड दिस इज बकेट लिस्ट इंक्लूड Ladakh also. I have never been to Ladakh before, and most probably on this dark horse only. तो भाई साहब मैं भूल गया बिल्कुल कि कैमरे से बात ही कैसे करते हैं. बिकॉज इन इंस्टाग्राम 30 सेकेंड 40 seconds max 60 second videos you have to upload. There's not much talking related stuff over there. It's mainly about B-rolls and cool and other informations. But YouTube, you have to be engaged with your audience. Man, I love this exhaust. Yeah, I love this exhaust. बस यहाँ पे पुलिस वाले अंकल ना हो, नहीं तो सारा लव एक झटके में उतार देते हैं भाई. है तुम पर आराम से निकालो.
1 2 3 4 5, अरे बाप रे। So we are going to do the basic service, oil change, air filter, oil filter। ये वाला मेरा टाइगर लैम्प फ्यूज़ हो गया, तो टाइगर लैम्प डलवाना है। Oh my god bro, Surinder Auto Works, specialist in bullet। पता नहीं दुकान खुली भी होगी कि नहीं, खुली हुई है। सर्विस हो जाएगी, घुसा दूं अंदर? लाइट है अंदर, वीडियो बनानी है, वीडियो ठीक है। See what I told you guys, an old cast iron getting restored। हाँ अच्छा लो, it's not a very big shop but it is what it is। 2-4 चीज़ें हैं इसमें। एक वो ऊपर का वो गैस्केट लीक हो गया है, टैंक के नीचे जो होता है, लेके तो आया हूँ मैं सब। हाँ, और ब्रेक तो अगली बार ही, पीछे वाले तो अभी चल जाएंगे ना। ऑयल तो मैं लाया ही हूँ, वो बताया था ना मोटूल वाला, वो मोटूल का बताया था ना 10-50, वो फुल्ली सिंथेटिक वाला। और अभी तो यही है, और ये फ्यूज हो गया है। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. Okay. Ooh. चलते हैं अपने रेगुलर स्पॉट पे, दैट्स गार्डन ऑफ 5 सेंस। होली मोली। तो सर्विस हो गई है, जाम भी हो गया। ये नई सर्विस के बाद जो नई वाली फीलिंग आती है ब्रो,
Surinder was like shocked कि motorcycle is in such a nice condition even after 4 years. हमने स्पार्क प्लग खोला, बिल्कुल नए जैसा खुला जो मैंने इरिडियम वाला लगाया था. He was like, and after the oil change the motorcycle was giving water out of the silencer. Man, I love it. This is true love. My boy. चलो थोड़ा ऑफ रोड करते हुए चलते हैं, उधर बात करेंगे. Damn man, feeling good. Cool. बढ़िया जगह चलते हैं. ऐसा 25 दिसंबर को यहाँ पे परिक्रमा कॉन्सर्ट भी हुआ था इन कोलैबोरेशन विद दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली टूरिज्म. सो यहीं चल के बात करते हैं. देयर आर सम किड्स प्लेइंग. So let's talk over here and I'll give you a breakdown of what all things we have done. Holy moly. So हमने यहाँ पे ये वाली गैस्केट चेंज हुई है बिकॉज इट वाज लीकिंग ऑयल. तो ये ऑयल वगैरह जो है पहले का, ये आप देख सकते हो. मूवर इंजन ऑयल चेंज हुआ है, चेन वगैरह टाइट हुई है. माई स्प्रॉकेट इज़ इन एक्सलेंट कंडीशन. इट कैन लास्ट अराउंड अनदर 9-10,000 किलोमीटर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम. ब्रेक पैड वगैरह पॉलिश हुए हैं बिकॉज अभी थोड़े बचे हुए थे एंड दिस टाइम आई एम थिंकिंग ऑफ अपग्रेडिंग द ब्रेक पैड्स टू सिरेमिक वंस एंड what all. बाकी नॉर्मल एयर फिल्टर वगैरह, ऑयल फिल्टर एंड और तो कुछ नहीं. नेक्स्ट टाइम अब देखो, अब तो स्प्रॉकेट वगैरह चेंज करवाना है मेरे को थोड़े टाइम में. एंड मेरा रेगुलर जो चेंज होता है वो ये बल्ब भी चेंज हुए हैं. ये ऑलमोस्ट हर 1.5 मंथ्स में मेरे को चेंज कराना पड़ता है. दिट्स AHO फीचर ऑन दिस मोटरसाइकिल. आई डोंट लाइक इट एट ऑल. एक पार्किंग बल्ब दे देते, वही जलता रहता. सो इट वुड हैव बीन बेटर. एंड लेट्स ब्रेक डाउन व्हाट्स द टोटल कॉस्ट. सो या द टोटल कॉस्ट दैट आई पेड फॉर द सर्विस वाज अराउंड 3638 रुपीज़. सो 2300 कुछ का तो ऑयल ही ऑयल था, प्लस 220 का एयर फिल्टर था. 97 रुपीज़ की गैस्केट थी और ऑयल फिल्टर भी 100 कुछ रुपए का था. एंड और तो कुछ नहीं यार. और बाकी लेबर मेरे को 750 रुपीज़ लगी थी जो सुरेंद्र ने ली. एंड आई थिंक कि ठीक है, सही थी सर्विस. अगर आप फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालोगे तो थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव तो हो ही जाती है सर्विस. यू कांट कंप्लेंट अबाउट दैट. बट यार लाइफ बढ़ जाती है. सो जहाँ आपको 2,500-3 हज़ार में किलोमीटर में आपका ऑयल चेंज होता है, वो अराउंड ऑफ 5,000 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर्स पे करा सकते हो. या प्लस टायर्स आर गुड नाउ. अब मैं 1-2 महीने में ये फ्रंट टायर्स हटवा के आई पुट अ ग्रिप एक्सेल और अ राइस मोटो बिकॉज द ग्रिप ऑन देम आर नॉट गुड. बाकी तो क्या, बाकी कुछ नहीं. बाकी मोटरसाइकिल गंदी हो रही है. बट सुरेंद्र आस्क्ड मी कि अब आप वॉश 2-3 दिन बाद करवाना बिकॉज अभी ऑयलिंग कर दिया मैंने. Man, it sounds sweet.
So this new year, this channel will be full of travel videos, filmmaking videos, more motorcycle content, so stay tuned. And if you like this video, hit a like, do subscribe and share this video with your friend. This is time for me to take a goodbye with you guys, and I'll see you in the next one. Bye bye. रात रात तेरी याद सताए रात रात वादे दिए कितने वादे दिए तेरी याद सताए रात रात तेरी याद सताए रात रात you leave दिन तेरे किड धा धा